हेलो कोडर्स, दिस इज द ट्यूटोरियल नंबर 010 एंड इसमें अपन सीखेंगे स्विच के बारे स्विच केस। सो क्रिएट करते हैं एक न्यू फाइल tut 0 tut10.cpp and write boilerplate. So switch case is an alternative of many if else if statements. Switch, अगर आप स्विच लिख के एंटर करोगे तो ये इसका सिंटैक्स आपको प्रिंट हो जाएगा। तो इसके अंदर अपन एक वैल्यू डिसाइड करते हैं और एक एक्सप्रेशन डिसाइड करते हैं जिसको अपन इस स्विच के कंडीशन में लिखते हैं। तो इसको करते हैं पहले बैकस्पेस एंड क्रिएट करते हैं एक कैर टाइप का वेरिएबल ग्रेड। तो स्विच की हेल्प से अपन एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाएंगे। सो ग्रेड को इनपुट लेने के लिए सीन का यूज करेंगे, सी आउट enter your grade and see in grade. तो नेक्स्ट अब अपने पास ग्रेड आ गया है, तो वी यूज द स्विच एंड वी यूज दिस parenthesis एंड राइट द एक्सप्रेशन, राइट द वैल्यू। सो अपने पास है ग्रेड। नेक्स्ट अपन अब इसमें अपन बहुत सारे केसेस बनाएंगे जिसमें ग्रेड की वैल्यू होगी। अगर उस केस से ग्रेड मैच करेगा तो उसके अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। सो फर्स्ट इज केस एंड वैल्यू ऑफ ग्रेड is A, then see out you got above above 90%. And so and next करते हैं break. So इसका मतलब switch, we use switch and grade is a value and that cases depends on the value of the grade. ओके, सो जब ग्रेड की वैल्यू ए होगी, जब अपन इसमें ए प्रिंट कराएंगे तो इसके अंदर केस ए एग्जीक्यूट होगा। तो यू गॉट अबाउट 90%। ऐसे ही अपन में बहुत सारे केसेस बना लेते हैं। एंड नेक्स्ट इज द grade B. For grade B you got above 75. Now you got between 75 to 90%. And if you get grade C, you got between 60% to 75%. If you got grade D, then you got between 6 45% to 60%. And if you get F, then you are fail you failed you fell. And next last is the default. If कोई भी अगर केस अगर मैच नहीं होता, then default case is getting executed. Default, sorry. So we write in default, please enter grade bit grade A to
F and break. So if now we execute this code, enter your grade. If grade is A, you got above 90%. If grade is B, then you got between that 70 to 90%. If you get grade F, then you failed. And if you grade T, then please enter grade A to F. So this is the switch case statement, and thank you for watching this वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।